लाइकवाइज अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन DsP3 है, इन दैट केस द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 5 एंड द ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और d orbital used is dz square, एंड sp3d होगी तो अगेन द ऑर्बिटल यूज्ड इज dx square y square. देखिए यहाँ पर d जो है, यहाँ पर इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ d पहले यूज़ हुआ है, यहाँ d बाद में यूज़ हुआ है. इन दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है, इसमें भी sp3d ऑर्बिटल है, इसमें भी यूज़ sp3d है. इसमें हमारे पास इनर डी ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है, इसमें हमारे पास आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है. तो इसकी ज्योमेट्री है हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल. तो उसके बाद है हमारे पास ये दो ज्योमेट्रीज d2sp3 और sp3d2, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है एंड द ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, ये मैं आपके साथ अलग से भी शेयर कर दूंगी ये टेबल. दिस हेल्प्स यू टू प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स. तो हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल जो है मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. ये एक कॉम्प्लेक्स है निकल का विद साइनाइड. साइनो हमारे पास इसमें क्या है, लिगेंड है, और इसमें जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है वो 2- है. तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना. तो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर एबल टू डू दैट. यू विल नो कि निकल का एटॉमिक नंबर 28 है. तो उस बेस पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाती है एर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड 3d8 4s2. तो अब क्योंकि निकल का यहाँ पर चार्ज है 2 पॉजिटिव, उस वजह से इट लूजेज द 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 4s. ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है. नाउ निकल इज ओनली लेफ्ट विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3d. सो नाउ व्हाट हैपन्स डैट अगर मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इसकी बता सकती हूँ कि इस तरीके से 3d में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेड हैं क्योंकि इनकी फिलिंग ऐसे होती है 1 2 3 4 5 6 7 8. पहले हम ये हर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन देते हैं. अब जो हमारे पास जब निकल अप्रोच कर साइनो जो है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड. सो व्हेन इट अप्रोचेस निकल फॉर complex formation, the nickel gets excited, it enters its excited state, its energy levels are increased. So since cyano is a strong ligand, जो मैंने आपको पहले कहा ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये क्या करता है, ये पेयरिंग कॉज करवाएगा इन इलेक्ट्रॉन्स की. क्योंकि हाउ मच ऑर्बिटल्स डज साइनो नीड्स, साइनाइड के पास कितने हैं, 4 हमारे पास लिगेंड्स आ रहे हैं. इसका मतलब निकल को 4 ऑर्बिटल्स अवेलेबल रखने हैं. किसके लिए, साइनाइड के लिए. तो निकल क्या करता है, यहाँ साइनाइड जो है वो जब आता है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है, और अब ये 4 ऑर्बिटल्स फ्री हैं, डी का 1, एस का 1 और पी का 2. तो ये क्या इन चारों की हाइब्रिडाइजेशन होती है. तो जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हमारे पास DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है. अब 4 ऑर्बिटल्स क्योंकि फ्री हैं तो ये 4 के 4 ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, रिसीव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द साइनाइड लिगेंड. And what do we get, we get DsP2 hybridization, and we know this geometry in case of DsP2 is square planar. So the complex of your nickel with tetracyanide is a complex which is having square planar geometry. And if I want to calculate the magnetic moment, you know it is equal to under root n into n plus 2 Bohr magneton. So since the number of unpaired electrons in this complex, we do not have to see the number of electrons in the free nickel ion, we have to see in the final complex. It's none of the orbitals has an unpaired electron, so it is 0. So eventually the Bohr magneton comes out to be 0. Since there no electron is unpaired, the magnetic nature of the complex is diamagnetic. So I hope you understood this part. Similarly, now we will take the example of, I have taken nickel again just to show the difference between a weak and a strong ligand. In this case again the oxidation state of nickel you see comes out to be +2. So the nickel has 3d8 4s2 configuration, but when nickel loses 2 electrons we get 3d8, but there is no electron in the s orbital, it is completely empty. Now ligands start approaching nickel ion, but in this case the ligand is weak. Halogens do not belong to the strong ligand category. So what happens that the weak ligands, they cannot cause pairing. So what happens that these 2 orbitals, they are not available for hybridization. Now nickel is left with these 4 orbitals, one s orbital and 3p orbital. So they hybridize among themselves to produce sp3 hybridized 4 orbitals. Therefore the geometry of nickel tetrachloride is tetrahedral.
octahedral. Okay, and if I go on to calculate the magnetic moment, you can see there are two unpaired electrons. So it comes out rotate, which comes out around 2 point something, and now the complex here, it will be paramagnetic because the complex has two unpaired electrons. So when we get the ligands from the chlorine, those ligands will have their electrons in these 4 orbitals. Okay, so I hope here you understood that the coordination number 4, we get two type of complexes, square planar and tetrahedral complexes, and now you know that the difference between these two type of complexes is depends on the nature of ligands. Later on we will see that other factors also, but right now you consider the nature of ligand. It's very important, as the strong ligands, they can cause pairing, whereas the weak ligands, they fail to cause the pairing, and in that case the hybridization is different. Now we have reached the coordination number 6. The coordination number 6, as you know, has octahedral geometry. So I have taken two cases. First, I have taken the case of cobalt, which has formed a complex with amine as ligand. Amine is a strong ligand, it's a good ligand. So the cobalt has atomic number 27, and the electronic configuration of cobalt is it's argon की outermost ये जो है इसके 18 plus 4s2 3d7. So outermost electronic configuration is 4s